अथ प्राधानिकम रहस्यम। भगवती के जो 3 रहस्य बताए गए हैं, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। उनमें पहला, अथ प्राधानिकम रहस्यम। ओम अस्य श्री सप्तशती रहस्य त्रयस्य नारायण ऋषिरनुष्टुप छंदः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता यथोक्त फलवाप्त्यर्थम जपे विनियोगः। राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्तुयोदिता एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि। आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमं अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिप। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता। मातुलुङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि। तप्तकाञ्चन वर्णाभा तप्तकाञ्चन भूषणां शून्य तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा। शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि। सा भिन्नाञ्जनसङ्काशा दंष्ट्राङ्कितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा। खड्गपात्रशिरः खेटैरलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम्। सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमां नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः। तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते। महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया। इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते तोऽश्नुते सुखम्। तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ। अक्षमालाङ्कुशधरा वीणापुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ। महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी। अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः। इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं। हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरं। श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम्।
महाकाली महारती महाकाली भारती च मिथुने सृजता सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेतांगं चंद्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली श्रितां स्त्रियं सरुद्रः शङ्करः स्थाणुर्कपर्दी चतुर्लोचनः त्रैविद्या कामधेनु शास्त्री भाषाक्षरा स्वराम् सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो हृषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुंदरी सुभगा शिवा एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो नुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृपत्रीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वदया सह सम्भूय विरिञ्चोण्डमजीजनत बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्यां सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमं पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः संजहार जगत् सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमयी ध्वसि महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमयीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानवृत नामान्तरैर्निरूप्येषा नाम्ना नान्येन केनचित् ॐ प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्। ॐ नमः चण्डिकायै। अथ वैकृतिकं रहस्यम्। ॐ ऋषिरुवाच ॐ त्रिगुणां तामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता सा सर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योग निद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटवनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासना दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशन दंष्ट्रासा भीमरूपापि भूमिपं रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्गबाण गदाशूल चक्र शंख भुषुण्डिव्रत परिघं कर्मुकं शीर्षं निश्च्योतरुधिरं दधौ। एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुं चराचरं सर्वदेव शरीरेभ्यो याविर्भूतामितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्महिषमर्दिनी
श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्गोरुन्मदा सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधः करक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणो शिकुलशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शंखो घंटा च पाशका शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजा मे भिरायुधै कमलासनां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रवृत शंखं घंटां लांगलं चिक्कारमुखं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामयम् महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयो पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चाष्टादशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभु पूजये जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिविरलङ्कारैर्गन्ध पुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सूर्या नृप बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता तेषां किल सुरामांसैर्नोक्ता पूजा नृप क्वचित् प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे घृतो देव्याश्छिन्नशीर्षं महासुरं पूजयेन् महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं
वाहनं पूजयेत् देव्या धृतं येन चराचरं कुर्याच्च स्तवनं धीमान् तस्याएकाग्रमानसः तथा कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवेत् चरितैरिमयि एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्थं तु न जपेज्जपच्छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रेता प्राञ्जलिर्प्रहवा प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि। ॐ नमः चण्डिकायै इति वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्। ॐ नमः चण्डिकायै अथ मूर्तिरहस्यम्। ऋषिरुवाच ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगत्त्रयम् कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्जैरलङ्कृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मी सा श्रीरुक्माम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम् रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशादिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम् वसुधैव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लम्बावति स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावति कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुधौ स्तने सर्वकामदुघौ स्तनौ खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलं जगत् स्थावरजङ्गमम् इमां यः पूजयेद् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुः स्तवं तं सा परिचरेद् देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना
शाकम्भरीं नीलवर्णां नीलोत्पलविलोचनां गम्भीरनाभिस्त्रिवली विभूषिततनूदरी सुकर्कशसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं श्लीमुखापूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसैर्युक्तं क्षुत्रणमृत्युभयापहं कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिभ्रति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदां उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूजयन् नमन् अक्षयम् अश्नुते शीघ्रमन्नपानामृतं फलं भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा चन्द्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा सुता तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिवृत् चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या याः ख्याता वसुधाधिप जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिता कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामवेष्टफलदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरं सप्तजन्मार्जितैर्घोरैर्ब्रह्महत्या समैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। ओम नमः चण्डिकाय। ओम नमः चण्डिकायै। इति मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम नमः चण्डिकायै।